more news that's coming in, and this is over the ASI survey that has now been given a go-ahead by the Allahabad High Court. Hours after the Allahabad High Court verdict came out, the Muslim side has now knocked on the Supreme Court's door. They've challenged the High Court order which directed the ASI, which is the Archaeological Survey of India, to conduct the survey of the Gyanvapi complex. Ananya Bhatnagar, my colleague, joining us, getting us more details. Ananya, this was unexpected lines, which is why we saw the Hindu side already move the Supreme Court earlier, saying that their side should also be heard. Well, definitely, Poonam, and you know that we've been pointing it out to our viewers as well, that the Muslim side is confirmed to Hussain and Uddin right in the morning that, they will be dividing their strategy post the orders of the Allahabad High Court would come in, post the full judgment copy would be out. And now finally the Muslim side has mentioned the matter before. In fact, the Allahabad, before the Supreme Court of India, the matter was mentioned before a bench headed by the Chief Justice of India, Dr. Justice Dhananjay Vishwanath. Very clearly, the CJI has, said that he'll look into the email of that urgent pensioning and would pass listing direction. So, what we also have to remember is that, the matter with regards to the maintainability of the suit of the Gyanvapi is already listed before the Supreme Court tomorrow. So, whether the Supreme Court would agree to hear the matter tomorrow itself, or whether it will grant a stay on, in fact, the Gyanvapi survey until tomorrow or not is something that we'll have to wait and watch for. We'll have to wait for the Chief Justice's directions to actually come in with regards to either the listing of this particular case or whether the Supreme Court will be hearing this particular matter right away. It's something that we'll get to know in a short while from now. But at the same point of time, the Chief Justice of India has acknowledged the request that has been made by the Muslim side, challenging that particular order of the Allahabad High Court, directing the Archaeological Survey of India survey to be conducted at the Gyanvapi site, except for the Wuzu Khana area, if you remember. And what has been very, very categorically stated by the Allahabad High Court in the detailed judgment is that, this survey can actually settle the scores at the very instance, and the scientific investigation, it can be ordered at any point of time. And also, the arguments of the Muslim side were turned down to its head by the judgment that is coming from the Allahabad High Court. Now, whether or not Supreme Court would be putting a stay on this particular survey, whether the survey would be allowed or not, all these questions would be answered only when the matter reaches the top of the country. And we'll have to wait and watch if that actually happens today itself or tomorrow, because as far as the ASI team survey is concerned, Ananya, the fact that the Allahabad High Court gave its nod, that paved the way for the survey to begin immediately, though the survey hasn't begun already. Perhaps it would begin later tonight or maybe tomorrow. Are we going to be seeing the same kind of restrictions that were initially put that are going to stay in place for the ASI survey? Well, we'll have to wait for such directions to actually come in from the Supreme Court of India. We'll also have to wait to see as to whether the Supreme Court would be hearing this matter today itself or not. So there is a less possibility that the matter is heard today itself. But we've seen in the past that how matters like these were listed in the evening as well for hearing. So whether or not the same would be allowed for the Gyanvapi survey or not is something that we'll have to wait and watch for. But at the same point of time, a stay can be granted by the Supreme Court. The Supreme Court is well within authority to grant a stay on the orders of the Allahabad High Court. Whether or not that happens or not is something that we'll only get to know when the directions from the Chief Justice of India, Dr. Justice Dhananjay Vishwanath, comes in. And we'll have to wait for his directions to come in on this regard. He will take a look at this matter and can pass the listing directions in the next few hours from now itself. Right, Ananya, thank you so much for getting us the latest on that. Do keep a track for when the Supreme Court does hear this particular case. But the Hindu side, of course, now the petitioners hailing the verdict that came to the fore from the Allahabad High Court earlier this morning. The ASI survey is going to take place inside the Gyanvapi mosque complex. Of course, there's no excavation that can take place. The Wuzu Khana is off limits as well. Listen in to some reactions that are coming in. चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में जो लिखित एफिडेविट दिया गया था जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित। हाई कोर्ट ने ये कहा कि जितने हमने केस लॉज दिखाए थे, लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद केस के सिलसिले में वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को एएसआई सर्वे का ऑर्डर दिया था और उसके खिलाफ मुस्लिम साइड ने सुप्रीम कोर्ट में
एक petition 24 जुलाई को फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगाई और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऑर्डर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में के सामने बात रखी गई और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है। यानी यकीनी तौर पर मुस्लिम साइड के पास अभी ये एक ऑप्शन मौजूद है कि इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाए जिससे कि कोई राहत मिल सके। मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष दोनों का ही फायदा है कि ऐसा ही सर्वे हो, तो इससे निचली अदालत को फैसला देने में आसानी होगी, ट्रायल में आसानी होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि आज के फैसले से केस की मेरिट प्रभावित नहीं होगी, ये केवल और केवल एक प्रोसेस है। मतलब हिंदू आज जीत गया, मैं ये भी कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनारस में आपका आदि विशेश्वर का पूरा स्ट्रक्चर है, मंदिर का पूरा अवशेष है, ये एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट में आ चुका है, तो हमें लगता है कि हम लड़ाई यहाँ से जीत चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी प्रकरण में आर्कियोलॉजी सर्वे की कार्रवाई को अलाउ कर दिया है। जो मुस्लिम पक्ष जाके हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी और उसके आलोक में हाई कोर्ट उन्हें कहा गया था कि आप आइए और वहाँ पे पूरा विचारण हुआ और आर्कियोलॉजी सर्वे ने अपना हलफनामा देके अपने सारे तथ्यों को रखा कि किसी प्रकार से ढांचे को नुकसान नहीं होगा और साथ में यह भी हिदायत है उसमें कि जो वजू खाना है जिसमें शिवलिंग प्रकट हुए हैं उसको किसी प्रकार से नुकसान या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और ये पूरी तरह से पूरे परिसर का जो बैरिकेटेड एरिया है रकबा नंबर 9130 जिसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद अवस्थित है उसके सर्वे कराने की बात आ गई है। उच्च न्यायालय के आदेश का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है वो पूर्ण होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो इंतजामिया की जो याचिका थी उसको खारिज किया गया है, यानी कि तत्काल प्रभाव से जो 21 जुलाई को वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला था वो कोर्ट का फैसला मान्य होगा। एएसआई की टीम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम कभी भी ज्ञानवापी परिसर में पहुंच सकती है, जैसा कि हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया। दरअसल यहाँ पर जो दलीलें थी वो दी गई थी दोनों पक्षों की तरफ से, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि सर्वे करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो सर्वे होगा, अगर खुदाई होगी तो जो मूल ढांचा है, जो ज्ञानवापी परिसर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये मूल ढांचे को क्षति पहुंचेगी। लेकिन एएसआई ने जो एफिडेविट दिया था उसमें कहा था कि मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचेगी क्योंकि ये सर्वे साइंटिफिक तरीके से होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी, एएसआई सर्वे को मंजूरी ज्ञानवापी परिसर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दी है। ये सबसे बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है।